हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल। ठीक है, फॉर योर क्लैट IIM IPM एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेक श्योर दैट you go through newspaper. That's very important. Let's start to talk about all this important, you can say, events. UAPA related news was there, so I'll explain what is UAPA. Ammonia gas leak and NGT के बारे में बात करेंगे. जापान ने बड़ा महत्वपूर्ण काम करा, हम उसके बारे में बात करेंगे. Not just that earthquake, okay? That's a bad thing happened with Japan. We are going to talk about Japan is going to become the 5th country to soft land on moon. फिजिकल डेफिसिट और INS इम्फाल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज UAPA? UAPA इज स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट. UAPA. Our Home Minister Amit Shah put it on X that Muslim League Jammu Kashmir Mashrat Alam faction, which is also known as MLJKMA, is declared as unlawful association under UAPA. So that's why what is this UAPA is all about. Let's understand. UAPA as a law was passed in 1967 because at that point in time, at that point in time in India there were a lot of problems were happening. Especially, you can say a state called Tamil Nadu came up with one political party of Tamil Nadu came up with an idea of seceding from India because there was Indo-China war in 1962 which we lost. That created a lot of, you can say, kind of bad word for India or Indian army in the mind of large number of people. ठीक है, and therefore Tamil Nadu में एक पार्टी थी DMK. That party said we want to separate ourselves from India, and they actually, you can say, contested election on that ground, telling people that if you vote us, we will take it separately. ठीक है, so that is problem. So therefore center ने उस समय पे कहा कि it is unlawful. Okay, therefore they said कि any idea which is seceding idea, देश से अलग होने की आइडिया को हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल. ठीक है, 1967 से चालू हुआ है. ठीक है, अब बीच में बहुत सारे बदलाव आए एंड वी विल टॉक अबाउट दोस. बट हाउएवर दिस इज भारत का बड़ा महत्वपूर्ण आज के ज़माने में इन द न्यू फॉर्मेट. इट इज़ एंटी टेरर लॉ. इंडिया का ये एंटी टेरर लॉ है. प्राइमरली भारत की सोवरेंटी और सिक्योरिटी के साथ अगर कभी भी छेड़खानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए UAPA लगाया जाता है. बिफोर 2004 इट वाज सेपरेटिस्ट एंड सेसेशनिस्ट लोगों को ऊपर UAPA लगता था. मतलब जैसे एग्जांपल आई गिव यू अबाउट तमिलनाडु. ठीक है, एनीवेयर इन द कंट्री सम ग्रुप ऑफ पीपल से कि वी वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस कंट्री, देन UAPA विल बी एप्लीकेबल. Yes or no? But from 2004 onwards, this is now not just secessionist or separatist idea, but it is all about terrorism. Okay, developing anti-national feeling. ठीक है, doing unlawful activities against state will also be considered. So this Muslim League Jammu Kashmir Mashrat Alam faction, which is MLJKMA, ठीक है, has been involved in various anti-national activities and their members are indulging into secessionist activity. सेसेशन करना था उनको, जम्मू कश्मीर को अलग करना था देश में से, एंड दे वांटेड टू एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल इन जम्मू कश्मीर विच इज डेफिनेटली अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी ऑफ आवर नेशन. एंड देयरफॉर वी आर, यू कैन से, इन अ राइटफुल वे टू पुट दिस UAPA on that particular group. Remember, this is UAPA gives absolute power in the hand of central government, ठीक है, for protecting India from sovereignty and security related issues. ठीक है, and there is a death penalty or life imprisonment as a highest punishment. Remember this, under UAPA both Indian and foreign national can be charged. Remember this, not just Indian national but also foreign national can be charged. It will be applicable to the offender in the same manner as if the crime has been committed in India, or even if it is committed outside India, but it is against our sovereignty and security, then it is applicable. सही है? Great. So UAPA के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी होगी? So there is investigation agency which is known as NIA.
national investigation agency that derives its power from NIA, sorry, from UAPA. This is very important because this NIA is an apex body. Wherever terrorist activities are happening, ठीक है, they will come under this. From 2004, ठीक है, through amendment we added a word called terrorist activities. So we defined what is terrorist activity, and we have also started to ban those terrorist organization. So far 34 outfits have been banned. One of them is called PFI. आपने सुना होगा है ना, PFI करके, याद है आपको? PFI जो केरला में बहुत सारे एक संस्था थी PFI की, और उसके द्वारा पूरे इंडिया में एक साथ NIA ने करीबन 300 से ज़्यादा जगह पे रेड लगाई थी. वेरी इंपॉर्टेंट. गिव मी फुल फॉर्म ऑफ PFI. इफ़ यू आर रेगुलर करंट अफेयर यू कैन से गीक, प्लीज टेल मी दिस. ठीक है. सो 2004 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी, एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड टू टॉक अबाउट कि किसी को हम डिजिग्नेट कर सकते हैं कि ये टेररिस्ट है या नहीं. ठीक है, चलिए बढ़िया. ओके, आगे बढ़े दोस्तों. लेट्स टॉक अबाउट एमोनिया गैस लीक केस का. 3 जनवरी को न्यूज आया दैट NGT टुक सुओ मोटू on the issue of ammonia gas leak in Ennore. Ennore is in Chennai. ठीक है. And what happened there? कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की एक फर्टिलाइजर फर्म है, और वहाँ पे दे वर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एमोनियम फॉस्फेट पोटाश सल्फेट, which is a fertilizer. They were making this, they were manufacturing that, and within that there was a gas leak took place. ठीक है. Generally in our environment 2090 microgram per meter cube is a safe level in 24 hours. So within 1 meter cube you can say air, if such kind of microgram is available of ammonia, that is acceptable. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर उससे ज़्यादा हो गया then it will create trouble. People will feel, you can say, nauseating, the body oxygen requirement will increase. ठीक है. और हमें जो जितना ऑक्सीजन मिलेगा it may not be sufficient, may be a possibility that person may die. ठीक है. These are the list of major gas leaks in India. One of the very famous one was 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी. आज तक भूल नहीं पाए हैं. Remember that Netflix वाला सीरीज which has just come in this December month. ठीक है. That is भोपाल गैस के ऊपर. रेलवे मैन करके आया है. गेल पाइपलाइन का 2014 में ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, 18 लोगों की मौत हुई थी. ठीक है. भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो thousands were killed. ठीक है. एंड lakhs were affected. उसका तो कोई गिनती ही नहीं था. ठीक है. भिलाई स्टील प्लांट गैस लीक. ठीक है. 6 लोगों की मौत हो गई थी. तुगलकाबाद के अंदर करीबन 400 स्कूल चिल्ड्रन वर हॉस्पिटलाइज. कानपुर एमोनिया गैस लीक 2017 में हुआ था, 5 लोगों की मौत हो गई थी. बेल्लूर, भिलाई, एंड लेटेस्ट वाज स्टीरिन गैस विच वाज कमिंग फ्रॉम LG के प्लांट में से आया था. ठीक है. दिस आर द काइंड ऑफ मेजर गैस लीक. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द NGT टेकिंग सुओ मोटो. व्हाट इज NGT? NGT stands for National Green Tribunal. National Green Tribunal, it is an apex body, specialized judicial body which is established under this NGT Act of 2010. Primarily all environmental related issues and disputes are settled under NGT. NGT has a jurisdiction over all environment related laws. Wherever environmental issues are happening, NGT has the power. The current chairman is Justice Prakash Srivastava of NGT. एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है. So what are the power and jurisdiction of NGT? They have a jurisdiction over civil cases related to environment issues. They can take suo motu power. That means self-motivated. That means even though there are no complaints against anyone on environment issue, the court wants to see on its own, they can do that. Okay. They can have a power of preventive role as well. They want to stop some bad things are happening. It's an appellate jurisdiction, so there is an appeal can be made. ठीक है. They are guided by principles of natural justice and principles of sustainable development. ठीक है. So natural justice के जो principle होते हैं कि nobody can be judged in his own case. ठीक है. And the other party has to be heard. Justice has to be done and it has to be seen to be done. Those are the principles of natural justice and sustainable development which are connected to the environment related issues. ठीक है. Japan came up with SLIM. The keyword is smart.
है ना, बड़ा मज़ेदार लॉन्च करा इन्होंने मून पे, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है. दे लॉन्च इट ऑन December 25 and it is going to be landing on moon on January 19. So that will become, Japan will become 5th country to soft land on the moon. So far it is India, so far it is America, USSR, China and India. 4 countries. USA, USSR, not Russia. Remember that. India, USSR, USA, China, and now Japan will be landing on it. ठीक है. It is quite low weight, है ना, compared to चंद्रयान. चंद्रयान के सामने ये 1/7 वेट है उसका. ठीक है. सो देयर बाय फ्यूल एफिशिएंसी और काफ़ी बेहतरीन काम करेगा. इट टुक लॉन्गर देन चंद्रयान 3. ठीक है. ओके. सेट टू लैंड ऑन दी सियोली क्रेटर. चंद्रयान लॉन्च हुआ था. चंद्रयान वॉज लैंडेड एट यू कैन से मानियोस एंड बोगलास्वाकी क्रेटर के बीच में रखा गया था. ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन लैंडिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ठीक है. सो इट इज़ जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी है, उसका ऑर्बिटर होगा वहाँ पे, सेलिन. ठीक है. एंड देर इज अ स्मॉल रोवर विच विल डू सरफेस एनालिसिस एज वेल. ओके. दे विल डू सरफेस एनालिसिस. ठीक है. इट इज ऑल्सो लॉन्च विथ XRISM, रिजम बोलते हैं इसको, एक्सरे के डेटा से दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज हैपनिंग इन दी यू कैन से यूनिवर्स, उसकी स्टडी करेंगे. स्लीम की सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया चाइना का 2026 का यू कैन से कोलाबोरेटेड मिशन ऑन मून विच इज नोन एज ल्यूपेक्स. ल्यूपेक्स विल बी इंडिया और जापान का एक कोलाबोरेटिव मिशन. रिमेंबर, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आर्टिमिस अकॉर्ड. यूएसए ने आर्टिमिस अकॉर्ड बनाया है जिसके द्वारा चांद के ऊपर जो स्टडी करनी है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इट. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे. फिस्कल डेफिसिट, इंडिया का जो टारगेट था 5.9% का, वी आर गोइंग टू ब्रीच दैट टारगेट फॉर दिस ईयर. रिमेंबर. ठीक है. हमने टारगेट अलग अलग रखे थे. 6.7 था हमारा, फिर 6.4 हुआ, 6.4 हुआ एंड 5.9 पे पहुंचे. ठीक है. अब ये 5.9 क्रॉस होगा, बजट में ये डिसाइड किया गया था. सो यू मे आस्क सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल हेल्थ. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू. Total expenditure minus total revenue. If the expenditure is more compared to revenue, then it is known as deficit. Yes or no? And this deficit is supplied through the kind of loan taken by the government. If government is taking loan, ठीक है, more loan, that means government has more fiscal deficit. Simple. ठीक है. Is this comfortable? So in other words, government expenses are exceeded by this amount of fiscal deficit. You can say exceeded the revenue. समझ में आया सबको? So that means it is all about borrowing. ठीक है. So fiscal deficit defines the borrowing of the government. Government borrows this much money, so this increases public debt. This increases public debt. Remember, this fiscal deficit may be good, may be bad. It all depends on the background, the context. So a high and a regular fiscal deficit tells that government is not managing their money in a good way. It is a bad thing. Sometimes temporary fiscal deficit is good because it is a need of the hour and we need to have a more borrowing to have more, you can say, infrastructure development. ठीक है. So macroeconomic stability is affected by this fiscal deficit. Sometimes more fiscal deficit is also increases inflation because we are borrowing more money. So in the economy there is more money supply. Yes or no? So that's how the idea is. And then we have something called INS Imphal. Very important vessel has been introduced in our Indian Army. It is the third warship under Project 15B. ठीक है. द पहला वाला था विच इज नोन एज INS विशाखापट्टनम. इट्स अ विशाखापट्टनम क्लास. ठीक है. द फोर्थ विच विल कम विल नोन एज INS सूरत. ओके. सो करंटली इट इज INS Imphal. Okay. So largest and most advanced destroyer, ठीक है, which is called Imphal. It is one of the largest one. ठीक है. Remember this. Project 15B is India's indigenous destroyer construction program. We are developing warship
पहला हमने बनाया विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, दैट इज कॉल्ड 66, ठीक है, ओके. देन 67 was मुर्मुगांव, then 67 is Imphal, and 69 is सूरत. ओके, सो दिस आर दी 4 वॉरशिप विच आर गेटिंग डेवलप. चौथी सूरत आने वाली है, नाम डिसाइड हो चुका है. INS Imphal is a part of project 15B and it is now already incorporated in our Navy. Is it very clear? समझ में आया सबको? चलिए, ग्रेट. सो दिस इज क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस सेशन. कंफर्टेबल होगा आपको. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ ProTalent. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.